Hey guys, what's up? So we will be dealing with reproduction again and again and again. खत्म ही नहीं हो रहा. Last time we dealt with some of the female reproductive systems. Now we will start our lecture with menstrual cycle. So still, if you have any doubt or any question, you can ask the question below the video on YouTube or on the Facebook page. That is facebook.com/my name romansani.official. So in menstrual cycle, what happens is it happens in only in the eutherian mammals. एक तो पहले पढ़ लेना प्रोथीरिया मेटाथीरिया यूथीरिया क्या होते हैं ये यूथीरिया में भी ओनली द प्राइमेट्स कौन कौन से होते हैं जैसे एप्स होते हैं ऑल द एप्स orangutan and gorillas and chimpanzees and all gibbons then monkeys and then humans only three they are called as primates females it's a regular cycle usual duration varies from 3 to 5 weeks ideally it is called 28 days plus minus 1 week is normal उसके फिर बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं यू विल रीड इट इन गायनोकोलॉजी लेटर इन योर लाइफ polymenorrhea, oligomenorrhea, etc. etc. Starting is marked by blood flow through vagina, last for 2 to 5 days or 3 to 5 days or 2 to 6 days. 3 to 5 is the normal duration. मीनार्क कल समझाया था सबसे पहले होता है थीलार्क थीलार्क मीन्स enlargement of breast then happens pubark that is growth of pubic hair then the third sign of puberty is menarche that is beginning of menstruation उसके बाद होता है मीनोपॉज तो मीनार्क अगर 15 पे होता है मीनोपॉज 45 पे तो रिप्रोडक्टिव एज कितनी हुई 30 ईयर्स मीनार्क अगर 12 पे होता है और मीनोपॉज 52 पे होता है तो रिप्रोडक्टिव एज हुई 40 ईयर्स दैट्स हाउ वी कैलकुलेट रिप्रोडक्टिव एज ऑफ अ फीमेल ऑफ अ प्राइमेट स्पीसीज ऑफ स्पेशली इन ह्यूमन बींग्स menstrual cycle ceases around 50 years of age menopause हो जाता है cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase it's good for your health in general also the major events is shown in the next slide as you can see here are the major events तो basically तीन phase होते हैं इसके let's assume this is the 0 day this is the first day as you can see this is the 5th day here you can see this is the 14th day the mid of the cycle this is 28th day तो जो फर्स्ट फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का दैट इज ऑब्वियसली कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल फेज जिस दिन ब्लीडिंग चालू होती है दैट इज कॉल्ड एज द डे 1 एंड इट कंटिन्यूज फॉर 3 to 5 days इट इज स्लाइटली वेरिएबल फेज कुछ वेरिएशन होती है इसमें ज़्यादा नहीं होती अब किसके इफेक्ट में होता है क्रैम्प्स वगैरह आते हैं जो पेन होता है वो इसी ड्यूरेशन में होता है किसके होता है ये अंडर द इफेक्ट्स ऑफ प्रोस्टेग्लैंडिन्स तो इस फेज में अगर आप देखोगे तो देर इज लो प्रोजेस्टेरॉन लो ईस्ट्रोजन बट हाई प्रोस्टेग्लैंडिन्स कल समझाया था प्रोस्टेग्लैंडिन्स विल एक्ट ऑन विच पार्ट it will act on myometrium and it will cause slugging off of stratum functionalis the functional layer of endometrium ऑक्सीटोसिन भी मायोमेट्रियम पे एक्ट करता है लेकिन वो पार्चुरेशन के टाइम पे एक्ट करता है सो दीज आर द स्पिंडल आर्टीरियोल्स जो कि स्लग ऑफ हो जाएंगे दे विल बी स्लग ऑफ एंड विल बी फ्लो थ्रू मेंस्ट्रुअल फ्लड और मेंस्ट्रुअल फ्लूइड और मेंस्ट्रुअल ब्लड नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल आल्सो कॉल्ड एज यूट्राइन साइकिल बिकॉज मेजर चेंजेस अकर्स इन यूट्रस यूट्रस में ये हो रहा है उसका मेंसिस हो गई फिर 5 दिन बाद द फेज फ्रॉम 5 to 14 days इट इज़ वेरी वेरी वेरिएबल फेज इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 3rd day इट कैन लास्ट अप टू 18th day इट इज़ हाईली वेरिएबल सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोलिफरेटिव फेज इसमें क्या होता है अगेन द यूट्रस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH follicle stimulating hormone uterus undergoes proliferation endometrium and stratum basalis and stratum functionalis they start to grow this so that is why it is called as proliferative phase proliferation हो रहा है and as the follicle releases it also releases estrogen under influence of estrogen also this phase happens now then comes on 14th day something called as LH surge that happens on the 14th day which is followed by the secretory phase why because corpus luteum is formed which secretes progesterone as well as uterine wall becomes very mucus and it secretes things it is also called as uterine milk now these are the myometrium and perimetrium not much happens here except in myometrium cramps happens under the influence of prostaglandins as you can see here now this is a fixed duration phase of 14 days and if it starts on the 12th day the menstrual cycle will last to 26 if it starts on the 10th day it will last till 24 and if it starts on 20th day menstrual cycle will last for 34 days so this is the fixed duration of 2 weeks now in ovarian cycle there's some changes in ovary also this is the PF what do you mean a PF PF is the primary follicle then it goes to the secondary follicle SF becomes tertiary follicle and it becomes Graafian follicle just before 14th day that is just before LS surge
Graafian follicle ruptures and it causes the release of secondary oocyte, not ovum. Please mark my word, it is secondary oocyte. Now the thing which is remaining becomes corpus hemorrhagicum. Corpus means body and hemorrhagicum means blood. So this is called as corpus hemorrhagicum, that is bleedy body. Then it becomes corpus luteum. It is responsible for secretion of progesterone for 9 days, and after if there is no sperm, if there is no pregnancy, if there is no human chorionic gonadotropin HCG, corpus luteum dies and what is left is corpus albicans, which remains as a scar on ovary. So this was all about menstrual cycle. Now these are the hormonal levels which happens during the menstrual cycle. So there are the pituitary hormone levels, also called as gonadotropins, which are released under influence of gonadotropin releasing hormone from hypothalamus. So just before 14th day आपको दिख रहा होगा there is LH में भयंकर rise हो रहा है. This is called as luteinizing hormone surge which causes rupture of Graafian follicle and ovulation, and this is FSH. Here you can see, and these are the level of estrogen. Estrogen is released by the theca cells of Graafian follicles, and these are the progesterone which is secreted after 14th day by corpus luteum, and it releases for 9 days. And if there is no pregnancy and no HCG, this dies and the progesterone level comes down, and estrogen level again rises after the cycle. So this 1 to 5 days, 1 to 4 days is menstrual phase. Then the rest of the phase till 14th day is follicular phase because there is growth of follicles. Then it is called a luteal phase, also called a secretory phase. And then the next cycle begins after 28 or 29 days. Here also you can see the blood vessel. These are the blood vessels. This region is called as meso-ovarium, from which blood vessels, nerves, arteries, veins, limbs, etc., etc., it comes to the ovary, and it is the basic nutrient supply of the ovary, as I have already told you. Mesentery, mesorchium, mesoovarium, these are the connective tissue which connects these organs to the abdominal or pelvic cavity, as the case may be. Then you have the primary follicle. Here you can see the primary follicle. This is the primary follicle. It is derived from primordial follicle in the fetal stages. Then you have this secondary follicle. Then you have there are some small follicles here also. They are called as atretic follicles which die and do not develop. Most of the follicles will die anyway. Starting में 4 million होते हैं, 2 million per ovary होते हैं. Then at the time of the birth 4 lakh per ovary होते हैं. In puberty they are not more than 50 to 60,000, and entire duration let's say 30 years की reproductive phase है और 40 years का है. So not more than 480 to 500 eggs will be released. So most of them will die as atretic follicles. Now ये जो Graafian follicles है, this layer is called as the theca externa layer. This inside layer is called as theca interna, which is followed by the granulosa cells, and this is the called as antrum, that is the cavity, and here you have the it is filled by liquor folliculi. It's very simple. This is the mature or the Graafian follicle, as the case may be. It is discovered by Graaff. This region is also called as cumulus oophorus, that is the site of the egg or the oocyte. Then this is called as a ruptured follicle because it has ruptured. Then this region is oocyte, and this is surrounded by corona radiata. Then this is the corpus hemorrhagicum first. This is corpus hemorrhagicum. This is corpus luteum. Finally, this is a mature corpus luteum, and this finally converts into corpus albicans, and this entire thing is the stroma or the connective tissue of the ovary. This is called as the cortex region. This is the medulla. So is that understood? Please take a screenshot of this diagram. It is very critical that you remember it by heart. देन वी हैव कॉर्पस ल्यूटियम. बता ही चुका हूँ, दो फंक्शन होते हैं, तो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में, एक प्रेग्नेंट फीमेल में. नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में इट लिव फॉर 9 days. इट विल सीक्रेट लॉट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन. इट विल प्रिपेयर यूट्रस फॉर pregnancy, but after 9 days if it does not happen, so it will die of its own, and this is called as weeping of uterus, disappointed uterus, because it did not get a chance to hold a
pregnancy. So it remains functional for 9 days. It secretes progesterone, mostly estrogen, inhibin, and relaxin to some extent under stimulation of LH. Okay, ninth day after formation of corpus luteum, there is no HCG release after pregnancy. It causes the degeneration of corpus luteum into corpus albicans. Corpus luteum means there is some pigment which imparts it yellow color. Corpus albicans, alba means white. जब भी एल्बा है इसमें रेक्टस एल्बा, जेसिका एल्बा, ऑल मीन्स वाइट. In pregnant female, it remains functional for 90 days and its degeneration is rescued by HCG. HCG कौन रिलीज करता है? Trophoblast cells in embryo. Now the main source of progesterone and estrogen in the first trimester, that is first 90 days, is the corpus luteum, but in second trimester placenta आ जाता है and it releases large amount of progesterone and which inhibits HCG secretion along with estrogen and it causes degeneration of corpus luteum. So placenta क्या release कर रहा है? Huge amount of progesterone plus huge amount of estrogen which inhibits the secretion of HCG. It causes death of corpus luteum. Now we have certain defects of female reproductive system as well. So इसमें एक तो होता है endometriosis. एंडोमेट्रियम कहाँ पे होता है? यूट्रस में होता है. अगर उसके अलावा कहीं पे भी पूरी बॉडी में एंडोमेट्रियम फैल रहा है, एब्डोमेन में, ओवरी में, ओविडक्ट में, इवन इनफैक्ट वेजाइना में, so this is called as endometriosis. It is very very painful condition and bleeding भी फिर अलग अलग तरीके की होती है इसमें. you'll read it in gynecology in your MBBS days. Then you have female sterility. It is anovulation means no ovulation. Then there is blockade of fallopian tube, very very common case of infertility. Anovulation is usually a sterile condition, but rest of them can be taken care of and they are called as infertility. So what do you mean by infertility? If after 1 year of non-protective regular sexual intercourse there is no pregnancy, after 1 year is the criteria and non-protective is the criteria and regular is the criteria of intercourse, if there is no pregnancy the couple is infertile, not a person, the couple is infertile. 33% of the time it will be male fault, 33% of the time it will be female's fault and rest 33% of the time it will be both couples fault. So basically it is one third, one third, one third, 33.33, 33.33 and 33.33. Either the uterus is unsuitable for implantation, that can also lead to infertility, and if it excessive vaginal acidity it can lead to death of sperm and also infertility. Now what are the major cancer associated? There are two of them, breast cancer and cervical cancer. एमेनोरिया में क्या होता है? देर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन व्हाटसोएवर. और डिसमेनोरिया में क्या होता है? देर इज़ पेनफुल मेंस्ट्रुएशन. डिस मीन्स पेनफुल, ए मीन्स नो. नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. ये होमोलोगस ऑर्गन्स को दिखा रहा है आपके. बेसिकली व्हाट आर द होमोलोगस ऑर्गन्स? तो बेसिकली देर इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देन देर इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो जो टेस्टिस होता है मेल्स में दैट इज़ अ प्राइमरी गोनाड्स, ऑब्वियसली फीमेल्स में ओवरी होता है. होमोलोगस का मतलब जो सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन से होता है. The same embryonic structure or the similar embryonic structure is responsible for them and the development is also on the similar lines. Second is scrotum. Scrotum की बजाय labia major होता है. Penile urethra is from labia minora. They are the similar structure. A membranous urethra is the bulb of the vestibule. Glans penis तो obviously I have explained it in detail. It is homologous to clitoris, but फ़र्क ये होता है, it is hollow, that is solid. इसमें 2 सिलेंडर ऑफ erectile tissue होते हैं. इसमें सिर्फ सिंगल सिलेंडर होता है, उस बार भी बताया था. इसमें सिर्फ कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होता है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा नहीं होता है ग्लैंड्स पेनिस में. एंड इट कंटेन्स पेनाइल यूरेथ्रा. देन देर इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड देर इज पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड एंड फाइनली देर इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड also called as Cowper's gland and there is Bartholin glands. Paraurethral gland is also called as Skene's gland. So moving forward, this is coitus. Coitus is followed by insemination, that is ejaculation. Insemination means deposition of sperms into the female genital tract, that is vagina. Vagina में जाके सीमन क्लॉट कर जाता है ताकि रिवर्स फ्लो बैक नहीं हो. Here the count of semen is 3 to 5 ml or 200 to 300 million. Now there is semen clot. Then it is followed by semen clot reliquefaction and it is followed by reverse peristalsis in female genital tract. So semen sperm will go front. Then there is ascending movement of sperm. यहाँ पे sperm count is approximately 200 million. Now competition starts. It is followed by capacitation. I'll tell you what is capacitation just now. And whichever sperm is the fastest moving, it will enter the ovum.
So this is entire story of sperm entry and movement in the female genital tract till it reaches ovum. What is capacitation now? The duration is 5 to 6 hours. Basically स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर सकता. जो स्पर्म आता है ना मेल से, उसमें एक डीकैपिटेशन फैक्टर होता है दैट नीड्स टू बी रिमूव्ड, एंड इट इज रिमूव्ड इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ fallopian ट्यूब फ्लूइड. नाउ sperm head is free to fuse with the ovum, the zona pellucida. Now there is entry of calcium in sperm head. उससे क्या होता है? It causes vigorous motility and it can move very fast. Now the key point is fertilization. This is extremely important. The site of fertilization is ampullary isthmic junction. इसको रट लो अच्छी तरह, इक्वेशन आएगा. Ampullary isthmic junction is the site of fertilization, and fertilization can occur only if the ovum and sperm reaches the place simultaneously. That is why majority of the copulations will not lead to fertilization. A single act of intercourse has 8% chance of fertilization, randomly speaking. Now here you can see this is the uterus. These are the sperms which have entered. They will move through the oviduct and they will reach toward the ampullary isthmic junction. This is infundibulum, this is ampulla, this is isthmus. And here you can see sperms are surrounding the egg, but only one sperm will enter the egg. I'll tell you why. Now these are the fertilization events. सबसे पहले capacitation होता है वो तो बता ही दिया. फिर the vigorously moving sperm, they will release corona digesting enzymes and hyaluronidase. I have already told you hyaluronic acid is animal cement. उसको digest करने के लिए इन दोनों को चाहिए होगा. Corona digesting enzyme and hyaluronidase will remove the corona radiata. Corona radiata is outer layer of ovum. Now the fastest moving sperm will come in contact with zona pellucida. Simple सी बात है. Now it is followed by agglutination reaction. उसमें क्या होता है? एंटी फर्टिलिजिन जो होता है स्पर्म हेड पे होता है, और फर्टिलिजिन होता है वो ओवम पे होता है. ये थोड़े हाई लेवल स्टफ है, एम्स लायक, तो इसको पढ़ लो. तो ये एंटी फर्टिलिजिन इट कंबाइंस विद द फर्टिलिजिन प्रोटीन एंड इट फॉर्म्स रिसेप्शन कोन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नाउ जो एक्रोसोमल हेड होता है स्पर्म का, after passing through the reception cone it releases zona lysin and it causes digestion of zona pellucida. तो zona pellucida कौन रिमूव करता है? एक्रोसोमल हेड which is formed by Golgi body. Now there is syngamy. तो जो फर्टिलिन प्रोटीन होता है स्पर्म का, that opens pore in ovum through which अब स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो आ जाता है, and proximal centriole along with nucleus it enters in ovum cytoplasm. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि स्पर्म का जो साइटोप्लाज्म है वो कांटेक्ट में नहीं आता है. दैट इज़ वाई माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस. माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक डीएनए होता है, अगर आपको पता हो. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है उसमें जो भी डिसऑर्डर होते हैं, दैट ऑब्वियसली ऑप्टिक न्यूरोपैथी एक डिजीज होता है, लेबर्स ऑप्टिक न्यूरोपैथी, दैट इज ट्रांसमिटेड ओनली फ्रॉम मदर टू मदर, बिकॉज मदर टू चिल्ड्रन, नेवर, इट डज नॉट फॉलो एनीथिंग. बिकॉज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए साइटोप्लाज्म में जो होता है दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू बोथ सन एंड डॉटर, देन अगेन ओनली फ्रॉम फीमेल टू all the individuals. Because of this reason, because cytoplasm of sperm do not enter ovum. Now syngamy sets in a motion to prevent polyspermy. Otherwise तो बच्चा ट्रिप्लॉइड टेट्राप्लॉइड हो जाएगा ना. So that is why polyspermy have to be prevented, and it ensure that only one sperm can fertilize an ovum. Okay, तो क्या होता है इसमें? जैसे ही स्पर्म घुसता है इट इंक्रीजेज कंसंट्रेशन ऑफ APF, एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर. अगर आपको याद होगा सेकेंडरी oocyte वाज अरेस्टेड इन मेटाफेज, सो नाउ देयर इज एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, सो दैट कॉजेज द मैच्योरेशन डिवीजन इन सेकेंडरी oocyte. उससे क्या होता है? एक तो हैप्लॉइड ओवम बचेगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ooted, एंड देन देयर इज सेकेंड पोलर बॉडी इज इजेक्टेड इन द पेरीविटलाइन स्पेस. तो ये तुम्हारा प्राइमरी oocyte होता है, दिस वन. इस पे होती है मियोसिस 1, से बनता है सेकेंडरी oocyte प्लस एक पोलर बॉडी 1. दिस अगेन अंडरगोज डिवीजन, सो इट फॉर्म्स पोलर बॉडी 2 एंड दिस फॉर्म्स द ओवम. दिस इज ऑल्सो हैप्लॉइड, दिस इज ऑल्सो हैप्लॉइड. नाउ इट इज फॉलोड बाय एम्फीमिक्सिस, that is fusion of sperm nuclei with ovum, and finally the centriole will divide and it will migrate towards the two opposite poles obviously, and it will form the spindle fibers for first cleavage division. So I hope you understood it. ये थोड़ा सा difficult था. I'll explain it with the help of a diagram. So as you can see this layer is corona radiata. So इसमें corona digesting enzymes plus hyaluronidase से इसको remove कर देंगे. Now this is zona pellucida
this zona pellucida layer will be removed by zona license. Then this is ovum's plasma membrane. Okay, and this is the reception cone which is found by antifertilizin and fertilizin. तो अभी आप देख रहे हो प्लस प्लस साइन है, माइनस माइनस साइन है, ठीक है. नाउ स्पर्म न्यूक्लियाई विल एंटर. दिस इज द स्पर्म न्यूक्लियाई प्लस अलॉन्ग विद इट्स प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. अभी प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल विल माइग्रेट टुवर्ड्स द टू अपोजिट एंड एज यू कैन सी हेयर, while the sperm nuclei will come in contact with ovum, and ovum, this secondary oocyte has divided into second polar body here after meiosis 2 after concentration of APF anaphase promoting factor. और ये वाला जो हो आपका oocyte, now it will fuse with the sperm to form the 2n zygote. उसके बाद जैसे ही ये घुसा अंदर, एक्रोसोमल रिएक्शन हुई है, फोड़ फाड़ के घुसा, सिनगेमी हो गई, तो डीपोलराइजेशन रिएक्शन चालू हो गया. इससे ये इधर माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया. नाउ स्पर्म हेड विल नॉट एंटर एनी स्पर्म. और इधर भी क्या होता है, ये दो विटलस लेयर के पेरीविटलाइन स्पेस है. द कंसंट्रेशन ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल विल स्टार्ट एंड इट विल फॉर्म अ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, एंड नाउ नथिंग कैन एंटर इट आफ्टर द कॉर्टिकल रिएक्शन. So this is how polyspermy, that is entry of more than one sperm inside the ovum, is prevented. यहाँ पे भी वही डायग्राम है, थोड़ा फैंसी है बस. दिस इज विटलाइन लेयर, दीज आर द प्रोटीन रिसेप्टर्स. हियर यू कैन सी द कॉर्टिकल रिएक्शन. दीज आर द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स which forms, and they will cortical granule will come out, their content, and it is showing the acrosomal reaction just like that. Now what is the mechanism to prevent polyspermy? बताया था depolarization होता है. This is also called as fast block to polyspermy. तो जैसे ही स्पर्म न्यूक्लियाई एंटर करता है, सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल चालू हो जाते हैं. ओके, सोडियम आयन वोल्टेज चैनल क्या करते हैं? दे एंटर इन द ओवम्स साइटोप्लाज्म एंड मेक्स इनर ओवम मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोपॉजिटिव. जो अभी दिखाया था आपको, पहले नेगेटिव थी, अब वो उसको पॉजिटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू आउटर मेम्ब्रेन. जैसे ही ये पॉजिटिव हुई, नाउ द पॉजिटिव विल रिपेल एंड द स्पर्म विल नॉट बी एबल टू एंटर इन इट. Because of this, the electrical change occurs, and the key feature, the fertilizin anti-fertilizin से जो बना था reception cone, that will disappear now. इसके disappear होते ही जो भी sperm attached थे, now they will be repel and they will move away from the ovum membrane. The slow process जो होता है वो तो बहुत fast होगा जो पहले हुआ था. slow process में क्या होगा? zona reaction होगी, उसमें zona pellucida फिर से बन जाएगी. That is also called as cortical reaction. It is a slow block to polyspermy. इसमें क्या होता है? डीपोलराइजेशन रिएक्शन होती है, दैट कॉजेज रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इन ओवम साइटोप्लाज्म फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन निकले, उन्होंने डीपोलराइजेशन कर दिया. नाउ दिस हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन, इट कॉजेज एक्सोसाइटोसिस, दैट इज आउटसाइड मूवमेंट ऑफ cortical granules. This outside movement of cortical granules, it spreads over zona pellucida. Okay, so cortical granules zona pellucida पे spread हो गए, which repairs the broken part of zona pellucida. अभी zona pellucida repair हो गई, and it makes this membrane impermeable. That is, it's not possible to enter now for more sperm entry. And finally, this membrane is called as the fertilization membrane. It will prevent polyspermy. So the last slide for today is the determination of sex. बहुत ही simple है. इंडिया में and other developing countries where the blame is put on female for determining the sex, it's absolute crap. The sex, technically speaking, is determined always and always by male. Not that we have a choice, but biologically speaking, it is determined by male. So basically, sex of the baby is decided at the stage when sperm nuclei fuses with that of ovum. Human male is XY and human female is XX. All the female gametes have X chromosome only, whereas male gametes, the sex chromosome could be either X or it could be Y, etc. Hence, 50% of them carry X and the other 50% carry Y chromosome. So after fusion, the zygote would carry either XX, obviously logically बात है XY. काफ़ी सारे डिजीजेस भी होते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में डबल XY हो जाएगा आपका, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. XXY भी होता है, ट्रिपल X भी होता है, सिंपल X भी होता है टर्नर सिंड्रोम में. Triple X is called a super female, XYY. So there are various conditions, but usually speaking, XX or XY will be formed depending on whether the sperm has X or Y and it fertilizes the ovum. So technically speaking, sex of the baby is always determined by father and not by mother. So I hope you enjoyed this video. Do hit the thumbs up button if you like. Do subscribe to this channel and let others also know if they are preparing for pre-medical. It will help them a lot. This is the Facebook page, facebook.com/myname romansani.official. You can also tweet to me at my Twitter handle at romansani.
Please spread the word as much as you can and help those who cannot afford the coaching. And thank you for watching the video. Have an awesome day.